Hello and welcome to another episode of ARD and World Cup start हो चुका है and it has started with a bang. And today हम रिव्यू करेंगे जो भी मैच हुआ जो भी यहाँ पे धुलाई फुलाई की इंग्लैंड के बॉलर्स की न्यूजीलैंड वालों ने तो let's start with that. Hussaina, what are your initial thoughts on the match? Okay, so the initial thoughts batting master classes from the New Zealand batters like Devon Conway and Ravindra. I was मुझे लगा था ये बॉलर है लेकिन हमारे खिलाफ ऐसी मजाक मजाक में वार्म अप में मैच पे बैटिंग करके चला गया बट व्हेन आई सॉ टुडेज मैच आई वाज ब्लोन अवे बट या गुड स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप एंड देखते हैं आगे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बैटिंग मास्टर क्लासेस मोस्ट प्रोबब्ली वैसे ये भी है लेकिन जिस तरह से बॉलिंग स्टार्ट हुई थी ना आई मीन जब जिस तरह मैंने देखा था कि मैट हेनरी से स्विंग कर रहा था बट ट्रेंट बोल्ट वाजंट गेटिंग दैट मच एनीथिंग फ्रॉम द पिच वी टॉक अबाउट दैट और शुरू में बहुत एक्सपेंसिव भी कहा था तो मुझे तो यही लगा था कि यार ये तो धो देंगे आज इसको बेयरस्टो धो देगा आज इसको क्या कहते हैं डेविड मलान धो देगा मुझे ऐसे ही लग रहा था शुरू में और अगर मैं ये बोलूँ ना कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस मैच तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि ओके दोबारा से एक फाइट होगी अच्छी दोनों के दरमियान एंड यू मे डिसएग्री यू मे एग्री दैट्स योर ओपिनियन लेकिन मेरा यही था कि एक अच्छी फाइट होगी एंड कर करा के आई स्टिल थॉट दैट इंग्लैंड वुड विन दिस मैच विच टोटली ऑपोजिट चीज हुई तो तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस मैच के साथ I was hoping for a low score thriller. मुझे लगा था last over तक match जाएगा. It would be fun watching it. But हाँ, batting was fun. I'm not gonna discount the batters. But yeah, I was expecting a low match thriller के थोड़ा सा वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में जैसे PSL की स्टार्ट नहीं होती है वर्ल्ड कप का स्टार्ट भी ऐसे हो बट या opposite happened and yeah I was expecting कि थोड़ा सा ट्रेंट बोल्ट को एक दो विकेट्स मिल जाएगी and I don't know why they went with sorry ट्रेंट बोल्ट को विकेट्स नहीं मिली बट मैट हेनरी को उन लोग का बॉलिंग लाइनअप मुझे वीक लग रहा था इनिशियली दे वेंट मुझे लग रहा था तीन बॉलर्स खिला रहे सारे आके इंग्लैंड के बैटर्स बेस्ट बॉल करके धो देंगे इनको बट जब मैंने देखा कि लाइक मैट हेनरी को विकेट्स मिल रही है तो आई थिंक दे प्लेड वेरी वेरी स्मार्टली द ओनली पर्सन हु वाज गेटिंग आई थिंक थोड़ा जो रन्स पड़ रहे थे वो रविंद्रा को पड़ रहे थे लेकिन ही मेड अप फॉर इट आफ्टर द everybody knows what happened but yeah we will talk about that we will talk about that later we will talk about Rachin Ravindra later तो लेकिन ये था कि और and that takes us to another question कि what went good for New Zealand ठीक है क्योंकि हम ये देखा था कि यार बॉलिंग वीक लग रही थी एंड लग रहा था कि डेविड मलान तो आज धो देगा शुरू में बेयरस्टो भी अच्छा उनको कर रहा था स्ट्रोक पे उसका बहुत अच्छा था और काफी ही वाज लुकिंग गुड बट something for New Zealand went very well. So, what's your opinion on that? Okay, so I enjoyed Joe Root's batting. Like मुझे लगा था कि जो रूट ले जाएगा मैच को एटलीस्ट 300 तक बटलर और जब जो रूट खेल रहे थे आई वाज एक्सपेक्टिंग के 300 तक तो चले जाएंगे आफ्टर द कोलैप्स हैपेंड आल्सो तो ये या आई वाज एक्सपेक्टिंग 300 एंड what went good for New Zealand that they used their bowlers really really well जितने भी bowlers से ट्रेंट बोल्ट को अगर विकेट्स नहीं मिल रही तो मैट हेनरी को बहुत अच्छी तरह यूज किया उन लोग ने एंड ग्लैन फिलिप्स स्पेशलिस्ट बन चुका है आई थिंक पाकिस्तान ने बनाया उसको स्पेशलिस्ट बट नाउ ही इज अ स्पेशलिस्ट ही टुक लाइक 17 रन्स पे 2 विकेट्स आई गेस I think 2 wickets yes he took 2 wickets Glenn Phillips की 17 runs पे 2 wickets हैं, yes, in 3 overs. yeah in 3 overs that went well और फिर वो लोग अपने bowlers को yes they played very smartly before the World Cup everyone discounts New Zealand for not reaching the semis but after the World Cup starts they showed that they are here and they're ready for they are to go to the semis no matter what Yeah, and मैं भी यही कहूँगा कि one thing that Tom Latham did very well क्योंकि आज केन विलियमसन नहीं था टिम साउदी भी नहीं थे वो दोनों इंजर्ड थे तो वो नहीं खेल रहे थे और ये एक्सपेक्टेड भी था कि वो पहला ये मैच वो नहीं खेल पाएंगे they will miss out on that even Ben Stokes wasn't available for today's match तो yeah लेकिन
the way Tom Latham used the bowlers, like ये चीज काश के वो बात होती है ना कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जी पड़ोसी के बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बाबर आजम से यही कहूंगा यार देख ले कि बॉलर इस तरह देख आगे पीछे करते होते हैं। या जी आई वाज होपिंग कि ये मैचेस ना पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ध्यान से देख रहे हो कि आफ्टर लाइक बॉलर्स आई वुड से कि इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है बट तो भी विकेट्स आ रही है ना तो हमें भी ऐसी विकेट्स लेनी चाहिए, हमारे बॉलर्स तो भी बिल्कुल बेटर है इनसे, तो आई डोंट शुडंट से दैट बिल्कुल बट या we have good bowlers, we have good bowlers, but it is a good lesson for Babar to see कि किस तरह से bowlers को change करना था। I mean जिस तरीके से शुरू में ट्रेंट बोल्ट को काफी पड़ रही थी, and Tom Latham replaced him with Mitchell Santner, and it is also an indication हमारे लिए भी कि we can use Nawaz for लाइक ओपनिंग द बॉलिंग, और वो कल का मैच है नेदरलैंड्स के साथ, और हो सकता है कि बट दैट्स अनदर डिबेट। जिस तरीके से मिचेल या स्टैटनर ने आगे रन रोके थे एंड दैट समहाउ रियली सफोकेटेड डेविड मिलान, तो उसने या भी शॉट मारने के चक्कर में विकेट दे दी, जो कि आई मीन यू गॉट टू गिव प्रॉप्स टू द बॉलर्स। और जिस तरीके से मैट हेनरी की कितनी जबरदस्त बॉलिंग थी, वो बॉल कुछ ना कुछ मूवमेंट उसको मिल रही थी एंड ही गॉट दोज आउटसाइड एजेस एंड यू नो I love that ball to Moin Ali from Glenn Phillips. Like जिस तरीके से classical off spin delivery left handed batsman को उसने की और bold किया जिस तरीके से, I loved that. And I यू think नो yes, आई वाज से एट वन पॉइंट हैरी ब्रुक बहुत मार रहा था, मुझे लगा था ये मैच चला गया इंग्लैंड के हाथ में आ गया बट विकेट गई, दैट वाज आई थिंक द मोमेंटम शिफ्ट हो गई फिर न्यूजीलैंड की साइड पे वंस हैरी ब्रुक वाज आउट। yep. And मैं यही कहूँगा कि जो tactics खेले थे न्यूजीलैंड की टीम में, they worked really well for them, और ऑन एंड ऑफ चल रहा था टू बी ऑनेस्ट। अगर इंग्लैंड की बात करें उनका ऑन एंड ऑफ ही चल रहा था, एंड द ओनली स्टेबल इनिंग्स या कोई स्टेबल पार्टनरशिप लगी भी थी तो वो क्या कहते हैं, आई गेस जॉस बटलर और जो रूट की लगी थी। उसके बाद से लाइक इट वाज अ डिजास्टर, एंड दैट टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड इन बोथ इन देयर फर्स्ट एंड इन देयर सेकंड इनिंग्स। तो क्या तुम्हारा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या गलतियां कर दी आखिर इंग्लैंड ने कि इतनी गंदी मार पड़ दी यार, कम ऑन लाइक 9 विकेट से हार। आई पहले तो हो सकता है कि टॉस का भी एक रोल हो इसमें, पिच लाइक मैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पे देख रही थी, बटलर सेड द कंडीशंस चेंज्ड, तो या पिच कुड हैव बीन अ मेजर पार्ट इन दिस बट दे वर आल्सो लाइक इतना कोई अच्छा खास खेला नहीं उन लोग ने आज, तो उसके अलावा आई थिंक दे डोंट हैव अ गुड लाइक अब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि इतना ज्यादा कोई खास बॉलर्स नहीं है इनके पास, दे हैव वुड दे हैव टॉपली आई एम थिंकिंग एंड बेन स्टोक्स इंजर्ड है तो उसका भी अभी अपडेट नहीं है कि वो सही मतलब कि वापस आ रहा नहीं रहा, हर्ड अ रूमर कि ही इज बीइंग रूल्ड आउट फॉर द होल वर्ल्ड कप बट लेट्स सी, तो आई वुड से दे हैव एवरेज बॉलिंग अटैक, वो ज्यादा हाई पे अब जाके आई थिंक आई एम रियलाइजिंग, मैंने पर्सनली रियलाइज किया कि इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। फिर मोइन अली आई थिंक ही इज लाइक मोइन अली कभी विकेट स्पिन हो नहीं रही तो उसका भी इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, आदिल रशीद का इज अ गुड बॉलर बट स्पिन विकेट्स है नहीं तो देयर इज नो इफेक्ट इन इट, एंड क्या बैटिंग पुअरली रैश शॉट्स खेलने की बेसबॉल के चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक, जैसे कि वो नहीं मारना स्टार्ट किया है तो यू आर प्लेइंग रॉन्ग शॉट्स एंड यू आर गेटिंग आउट, आप देख नहीं रहे कि सिचुएशन क्या है, व्हाट सिचुएशन इज डिमांडिंग इट फ्रॉम यू कि आप थोड़ा सा विकेट पे जो रूट बैटिंग बैटेड ब्रिलियंटली बट मैं हैरी ब्रुक की बात कर रही हूँ, वो रैश शॉट्स मारने के चक्कर में आउट होके गया है, तो उस वजह से आई थिंक दैट दैट्स व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड के, थोड़ा सा एवरेज पेस अटैक एंड द बैटिंग रैशली के चक्कर में दे लॉस्ट देयर विकेट्स एंड बहुत बिलो एवरेज स्कोर गए। इंटरेस्टिंग थॉट्स इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि आई मीन द पिच वाज अ बैटिंग पिच। हाउएवर आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं कि डेवन कॉनवे प्ले स्पिन रियली वेल, एंड रचिंद्रा की फॉर्म पहले बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। 97 उसने वार्म अप में मारे थे हमारे गेम्स, तो यू कैन से दोज थिंग्स प्लेड आउट कि यस विकेट्स ही स्पिन किए हैं, एंड न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग डेवन कॉनवे हु इज एक्चुअली रियली गुड एट प्लेइंग स्पिन। तो
I think went well for New Zealand, but on a hindsight, it was something where England was going to struggle eventually. But जो दिन पे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही जीत जाता है and New Zealand really did really well today and they deserved it to be very Yeah, honest. they played really well. Yes, New Zealand. and that takes me to an interesting question. क्या तुम्हें लगता है क्या कहते हैं रचिंद्रा को ये मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बिकॉज डेवन कॉनवे भी 152 रन इनिंग्स खेली थी एंड ही प्लेड रियली वेल एज वेल तो लाइक should he have That gotten is, that award? अगर देखना जाए तो रचिंद्रा ने रन्स भी खाए थे, तो उसके बाद भी मैन ऑफ द मैच जो क्या है वो रचिंद्रा को क्या है, बट डेविन कॉनवे और रचिंद्रा बोथ डिजर्व इट, आई थिंक इन द बैटिंग इनिंग्स, क्योंकि बॉलिंग तो की नहीं है डेविन कॉनवे ने, बट रचिंद्रा डिड, तो आई वुड से कि I would prefer Devon Conway to be the player of the match rather than Rachindra, but he also batted brilliantly. But coming in your debut World Cup and scoring 100 in your first World Cup match is a big thing, and it's a big, I think, a really proud moment for him. For him, so I think it's a good morale booster for him because a man of the match be mila hai on his first debut match in the World Cup. So it's debatable, but yeah, good for him, I would say. हाँ और मतलब मैं भी यही सोच रहा था पहले कि ओके ये थोड़ा डेवन कॉनवे को मिलना चाहिए था बट अगेन तुमने भी कहा था कि ये टर्निंग पॉइंट इस मैच का वो था जब हैरी ब्रूक की विकेट गिरी थी एंड रचिंद्रा वाज द गाय हु गॉट हिम Yeah. तो मे बी दैट प्लेड आउट तो अ गुड ओपनर फॉर द वर्ल्ड कप आई वुड से बाकी लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस कल पाकिस्तान का मैच है एंड आई होप वी डू वेल इन दैट मैच बाकी अल्लाह मालिक है यार एंड No, yeah, I not guess. no Yeah, I guess. Netherlands versus South Africa happening again tomorrow. यार ये जो है ना ये मैं वीडियो को थोड़े अच्छे एंड पे खत्म करना चाह रहा था बट ओके व्यूअर्स आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड एंड लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ये टिकर कब से नीचे चल रहा है यार कम ऑन इसको फॉलो भी करना होता है यार तुम लोगों ने कम ऑन Yes. यार ऐसे Yeah. ऐसे तो नहीं या Click the subscribe button. या अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हो सैना की बात सुन लो कम ऑन so we will meet you guys tomorrow in the next episode